गुड। तो मैं ये पूछ रहा था कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन आर एंड मैक्सिमम हाइट? क्या आप कोई रिलेशन जानते हैं? एनीवन कैन टेल मी? चलिए मैं बताता हूं आपको। मैंने कल ही बताया था कि मैक्सिमम हाइट एच मैक्स अपॉन रेंज इन फॉर एनी एंगल is equal to what? 1/4 into tan theta. आप याद करो, ये फॉर्मूला मैंने कल ही बताया था। एंड इफ यू नो दिस फॉर्मूला देन you can ignore a very long calculation. If you don't know this formula, then you have to make the calculations, you have to compare the things, okay? Otherwise you can solve the question directly. See, h max is 100 upon 400, r is 400, and this is 1/4 tan theta. 4 will cancel out, you will get tan theta is equal to 1, and again theta is equal to 45. Tell me whether it is clear or not. आप कुछ फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है उसको काफी ध्यान से संभाल के रखिए, कभी भी काम आ सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। Is it clear, Vijay? Anyone can tell me whether it is clear or not? Yes, sir. Okay. Oh, time is going to be over. Okay, today I'm just going to send you some assignment, and I hope you will try. Okay? Is it okay, beta? Okay, sir. Okay, sir. And we will again discuss the questions on projectile tomorrow, and then we will start the circular motion. Okay, day after tomorrow we will start the new topic, that is circular motion. Okay, bye Vijay, you can leave the class. कुछ questions we have to see from the projectile, then we have to start the circular motion today. The speed of the projectile at its maximum height is √3/2 times its initial speed. What does it say? क्या साउंड इको भी हो रहा है? Is there any echo in sound? No, sir. Angle theta, an object is projected. Maximum height, its velocity, suppose it is this v is equal to u cos theta, as we know. Anyone can explain why it is u cos theta? क्या हमने कल इस क्वेश्चन को किया था? See, in this direction velocity is constant. In this direction means horizontal direction में velocity होता है इसका u cos theta, and in vertical direction the velocity is u sin theta. At maximum height this becomes 0, means vertical velocity is 0 at maximum height, but horizontal velocity remain constant throughout the journey,
So it has only the horizontal velocity. Okay, the speed of projectile at its maximum height is √3/2 times of initial speed. What is the initial speed? That is u. Means u into √3/2 is equal to u cos theta. Because according to the question, the velocity is √3/2 times, and according to the concept, it should be u cos theta. U will cancel out. You can get √3/2 here. Cos theta equal to. It means theta is what? 30 degree. Okay. Now see what is asked in the question. Now see, what was the formula? We have already discussed about the height, maximum height and range. √3 क्या बेटे? डी ऑप्शन सर. हाँ, डी ऑप्शन वो हम देखते हैं, लेकिन आप फॉर्मूला बताइए, एच और आर का रेशियो क्या होता है, मैक्सिमम हाइट और रेंज का रेशियो क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा. गुड, tan स्क्वायर थीटा. और भी कुछ होता है? डिवाइडेड बाय 4. Yes, good. Divided by 4. So here you can find the n, the range of the projectile. देखिए क्या कह रहा है, range of the projectile is n times the maximum height. N times the maximum height. It means what? R upon h is equal to n according to the question. और आपके अनुसार ये है 4/tan स्क्वायर थीटा. तो आपको अगर n का वैल्यू चाहिए तो आप 4/tan स्क्वायर थीटा निकाल लीजिए. 4/√3 स्क्वायर √3 30 m 1/√3 होगा सर. 1/√3. Yes, I'm just taking the value. tan स्क्वायर थीटा होता है या tan थीटा होता है बेटे? मैक्सिमम हाइट और tan होता है बेटे, tan स्क्वायर नहीं होता. हमने ये फॉर्मूला गलत किया, ठीक है. तो 4/tan theta, and tan theta is 1/√3, so it is, and this is the value of n in this question. Now see the 13th question. 12th question is clear.